Let me introduce our today's speaker guest, Dr. Kalpana Khadeji. She is a distinguished figure in the medical community, serving as a consultant gynecologist and infertility specialist in Indapur. With a profound commitment to healthcare, she has taken on leadership roles including President of the Indian Medical Association in Indapur and an executive member of the IMA Women Doctor Wing at the state level in 2024. Her exemplary contributions have been recognized through various accolades, including the prestigious Best IMA President in the State Award for the year 2023 and 2024. Dr. Khade's dedication to community health is evident through her involvement in projects like the State IMA Aao Gaon Chale project, for which she received the President Appreciation Award in 2023-24. Furthermore, Dr. Khade's leadership has led her branch to national recognition, as her efforts were instrumental in receiving the Best IMA Branch of 2023 and 24 award at the national level. Now, in today's session, she is going to discuss about the post-delivery, what are care should be taken, what are the challenges in post-delivery, and what is the role of yoga in post-delivery. So, I would like to hand over the mic to Dr. Kalpana ma'am. Yes, ma'am, all yours. Thank you, Kapil sir, for your kind words. Hello, everyone. Can you hear me, sir? Hello? Yes, ma'am, you are completely audible, loud and clear. Sir. Yeah. So, thank you, sir. I am here to talk to you a few words about the postpartum period care and role of yoga after childbirth. In yesterday's session, Kapil sir and Vaishali madam has covered the pre-pregnancy and pregnancy period. Now you have completed 9 months of pregnancy and those long hours of childbirth. Now you are officially a mother. So congratulations first of all mothers and Kapil sir and Vaishali madam for guiding them in such an exciting, exhausting and a long journey. Now my duty starts. About the postpartum period, this time is after the childbirth and 6 to 8 weeks following. Mother have to remember that get more of themselves because body is undergoing lots of healing and recovery at this time. I would like to give some suggestion for postpartum period recovery. Firstly, to get enough sleep. There is an old verb, sleep when the baby sleeps. This is not so easy, I know, but try to get help as much as possible so you don't miss out your naps. You can ask help from your family members, like from your husband and relatives. Next thing about the diet. During pregnancy, everyone concentrate about eating healthy food, eating on time and all those. But many of them forget it after delivery. But it is as important as during the pregnancy. For the diet, we see two extremes. One group we see in this period who don't eat on time. They skip their meals because they were so overworked and stressed out. Other extreme, we see that they overeat or eat any sort of food like junk food and they gain weight during the postpartum period. Both these extremes are not healthy for mother and baby as well. It is important to concentrate on type of food we eat and eat on time. A balanced diet consists of enough fruits, vegetables and proteins. It is also important to drink plenty of liquids to avoid alcohol and caffeine if you are breastfeeding.
यहाँ सर मैं एक बताना चाहूंगी सबको कि खान पान के बारे में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एडवाइस देते हैं कि आप आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप ज्यादा पानी मत पियो, पाणी से आपका पेट रह जाएगा, या मराठी में म्हणतात की वात राहील किंवा और यू कैन गेन वेट. बट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एडिक्वेट वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द वाटर शुड बी प्यूरिफाइड. नहीं तो कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन क्रिएट्स अ मेनी मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स. वैसी ही बात अबाउट द डाइट है. डाइट में फ्रूट्स एंड सैलड्स दिए ही नहीं जाते पोस्टपार्टम पीरियड में. बोले जाते हैं कि बच्चे का पेट आएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड एंड सैलड should be given in this postpartum period because they provide you a plenty of fibers and many more vitamins. These they can prevent the constipation and avoid the problems like piles and fissures which arises most commonly in the postpartum period. Now, another important concern is exercise. Now, the main and second part of my talk is the role of yoga in postpartum period. Your doctor will let you know when you can do exercises, but it depends on whether you have vaginal delivery or cesarean delivery. As we divide pregnancy period in 3 trimesters, first trimester, second trimester and third trimester, the postpartum period we also call it as a 4th trimester, and we divide it as immediate postpartum period and late postpartum period. So first we will see the care exercises, what exercises we can do in a immediate postpartum period. So this period is of 4 weeks after the childbirth. In this period, pregnant woman often becomes inactive after the childbirth. Deconditioning happens in the immediate postpartum period. Pelvic floor muscles are weakened due to childbirth. Therefore, pelvic floor exercises should be started in immediate postpartum period. So, we healthcare practitioners advise them the simple thing, walking. Walking you can start when the pain and soreness of delivery is over and you are not feeling any pain. Walking tones up your muscle and it is a good mood booster. If you are doing walking in early morning, it gives a daily dose of vitamin D. The second thing we healthcare practitioners advise in this period is Kegel's exercises. These exercises mean to strengthen the lax muscles around the vagina and perineum. Again, this can be started once perineum is less. This is done by tightening the muscles around the vagina and anal canal. It is done as you are holding your urine and not to urinate. Hold this position for 5 seconds and relax it. Do 10 sets of like this 3 times a day. And another important thing that we can do in an immediate postpartum period is deep breathing exercises. It is called pranayam. So the pranayam, this technique, this enhances the oxygen levels in the body, reduces the fatigue, rejuvenates the cells and improving overall health, and increase oxygen help in nutrient distribution at the cellular level and benefiting both the mother's health and quality of breast milk. Now we will see the late postpartum period. In this period, normal physical activity can be resumed 4 to 6 weeks after vaginal delivery and 6 to 8 weeks after the cesarean delivery. Postpartum women should target
moderate intensity activity. So for how many period they can do the moderate intensity activity? So in scientifically we said कि 150 minutes per week they can do this activity. So sedentary timings like sitting, watching TV, using a mobile phone should be limited and replaced with light intensity activities and moderate intensity activities under the guidance of an expert. The expert guide found aids. First is advice, agree, assess, like they should, the yoga expert should assess the health of person, accordingly advise which matches with their schedule and resources. Expert should teach and assist them in performing asanas with the correct techniques irrespective of age and health status. This ensures optimum gain and minimize the risk of injury. Apart from this, timely follow-up should be scheduled and change the plan of exercises accordingly. Now, the most important thing I am moving on the emotional or psychological health in this period. I will say it is very common in postpartum period that the woman experiences some sort of anxiety, sleeplessness, emotional upset and crying. It is also called as postpartum blues. This period lasts for 2 weeks, but if it lasts longer, then you should take advice of your health practitioners. It is due to the overdose of hormones occurring in the body and stress of taking care of the baby. It is the solution. For such type of problems, like various postpartum yoga improves calmness, reduces irritability and anger, increases the energy, lowers the blood pressure, and reduces the muscle tension, and helps in relaxation. Along this yoga, it helps in reduction of postpartum weight, body fat percentage, fat mass, and improves the basal metabolic rate. Low intensity yoga asanas help in quick recovery, and it helps in stretching the abdominal muscle and improves the blood flow and balance. To conclude about the yoga during the postpartum period, I would like to say that it is important for maintaining the healthy lifestyle. It is preventive, curative against the various complications occurring in the postpartum period, and due to the obesity, overweight, and physiological and psychological benefits of yoga are much more there. Sir, there are some common questions in my practice I face usually. बहुत सारे लेडीज जो बोलते हैं कि मोर देन 90% औरतों को जैसे बॅकएक बहुत होता है, जसं आपण मराठीत म्हणतो की घरोघर मातीच्या चुली आहे, तसं घरोघर कंबर दुखी असं आहे की हिंदी जैसे घर घर में चूल है पकाने के लिए, वैसे घर घर में हर औरत को बैकएक है. मोर देन 90% औरत ladies had this backache, but and there are misunderstanding कि ये backache due to cesarean section है या जो इंजेक्शन सिजेरियन के दौरान दिया जाता है बैक में, उसी वजह से हम लोगों को बैकएक है, ऐसे बहुत औरतों का समझ है और इसीलिए उस पे वो कुछ उपाय नहीं करना चाहती है. वो समझ के लेती है कि ये बिल्कुल वो इंजेक्शन की वजह से है. लेकिन मैं यहाँ पे ये बात फोकस करना चाहती हूँ कि वो जो इंजेक्शन है, एक तो वो अपने बैक के हड्डी में नहीं दिया जाता, अपने जो पीठ है या कमर है, वो वहाँ पे छोटे छोटे हड्डी का एक
जैसे मार रही थी उसको हम वर्टिबल कॉलम बोलते हैं. होते मध्ये मध्ये Can I stop, sir? Ma'am, please continue. Continue. Okay, Yeah. sir. So this bones we call the sequence of bones we called it as जो इंजन है वो इतना छोटा रहता है कि इट्स अ स्मॉलर देन 10 टाइम्स स्मॉलर देन जो इंजेक्शन हम हाथ में लेते हैं उससे वो 10 टाइम्स स्मॉल वो सुई वो जो निडल रहती है और वो निडल किसी हड्डी में नहीं डाली जाती. वो जो दो वर्टिबल कॉलम रहते हैं वो दो वर्टिबल कॉलम में एक छोटी गद्दी रहती है. वो गद्दी में वो सुई हम इंसर्ट करते हैं और उसमें से वो इंजेक्शन दिए जाते हैं. तो वहाँ वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड में. तो वो जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड रहता है उसमें वो इंजेक्शन छोड़ा जाता है जो कि एब्डोमेन जैसे लोअर बैक अप टू थाइज वो एनेस्थेसाइज करता है जैसे स्पाइनल एनेस्थेसिया सब्जी रायता चना की दाल की लौकी. Ma'am, you are muted, ma'am. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Okay, so I was in a spinal anesthesia. तो वो वहां पे दिया जाता है तो किसी हड्डी में नहीं दिया जाता. तो ये कारण बिल्कुल नहीं है कि सिजेरियन के टाइम जो सुई दी जाती है इसकी वजह से कमर दुखती है. कमर दुखने के लोअर बैक पेन के कुछ अलग कारण हैं जैसे कि बेबी फीडिंग पोजीशन, बेबी सिटिंग पोजीशन. जब आप इमीडिएट मदर बनते हो और आप बेबी को फीडिंग करते हो तो बेबी सिटिंग पोजीशन बहुत बहुत टाइम रॉन्ग होते हैं. जैसे आप झुक के बैठते हो, झुक के बैठने से क्या होता है कि लोअर बैक एंड बैक मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और उसी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और वो परमानेंटली वहां पे पेन हो जाता है. और कुछ डिफिशियंसी जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी, डाइटरी डिफिशियंसी की वजह से ये लोअर बैक एक हो जाता है. तो हाउ टू ओवरकम with this problem? So proper baby sitting position, you should sit taking with the support for your back and hold the baby upwards. आपको झुकना नहीं है, आपको बेबी को ऊपर उठाना है और टाइट बैक रख के आपको बेबी को फीड देना है. सो इट्स अ प्रॉपर पोजीशन फॉर बेबी सिटिंग. एंड डाइट जैसे हमने बोला कि देयर शुड बी एडिक्वेट proteins, calcium, iron and everything. So calcium rich is food आपको लेना चाहिए और with doctor prescription you should take the calcium tablets for at least 1 year and iron tablet it's ranging from 1 to 3 months accordingly with vitamin D tablets. So that will protect you from the backache and of course these yoga techniques. जैसे हमने समझा है कि आपको इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में क्या करना है और आफ्टर पोस्टपार्टम डेफिनेटली दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस फ्रॉम द बैकएक्स. एंड अदर थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व इन माय डे टू डे ओपीडी कि आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी या आफ्टर वजाइनल डिलीवरी आल्सो आपका पेट रह जाता है. जैसे वी कॉल्ड इट एज अ सेंट्रल ओबेसिटी. इट इज मोर कंसर्न टू द वुमन अबाउट देयर सेंट्रल ओबेसिटी. और वो बोलते कि नहीं सिजेरियन हुआ है ना तो मेरा पेट उससे ही बड़ा है, मेरा पेट उससे कम ही नहीं हो रहा है. इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू योर टाइप ऑफ डिलीवरी और एनी टाइप ऑफ डिलीवरी. इट इज रिलेटेड जैसे क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी योर एब्डोमिनल मसल्स आर स्ट्रेच्ड आउट. योर womb is carrying the 3 kg or more than 3 kg baby. So your all abdominal layers, specifically your abdominal rectus abdominal muscles is stretched out at that much extent, and after delivery that becomes lax. That so it is more the
laxity of the abdominal muscles that is protruding, that causes you a central obesity and you are a sedentary life in this period. So आपको इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस इज द सॉल्यूशन. आप इसी तरह से आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करोगे ना. तो इसीलिए हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि केगल्स एक्सरसाइज, it strengthens your muscles, it tones your rectus abdominis muscles and hold the vaginal and perineal muscles. And more of course the pranayam, the deep breathing exercises in whole of the pregnancy period and the postpartum period, it is most is helpful. So myself, its talk is over, sir. If you want to ask any questions, always welcome. Definitely, ma'am. Thanks for a very nice informative talk, and you have explained lots of things which are very less observed by the females, particularly after the delivery. So I will ask audience, please raise your questions, and if you have any question, you can raise here so that ma'am can answer. Yes, please unmute yourself. I allowed everyone to unmute, so you can unmute yourself and ask questions. हॅलो. हा, येस हा मॅडम. हाय. मॅडम, प्रेग्नन्सी नंतर जे ओटी पोट वाढतं ते कधीच कमी होत नाही, काही करत नाही. नाही मॅडम, नाही. मी ऍक्च्युली हा प्रश्न की नाही खूप विचारला जातो की प्रेग्नन्सी नंतर पोट वाढतं. मी आता कारण सांगितले मॅडम की प्रेग्नन्सी एक तर काय आहे बरं का मॅडम, तर की ती लॅक्सिटी आहे ॲब्डॉमिनल मसल्सची. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की आपल्याला पूर्ण प्रेग्नन्सी ती बेबी कॅरी करतानाची ना अशी पोट काढून चालायची सवय लागलेली असते. तर ते काय होतं की इमिडिएट आफ्टर डिलिव्हरी पण आपण त्याच पद्धतीने चालायला लागतो. तर खरं पहिली गोष्टच काय झाली पाहिजे की इमिडिएट आफ्टर डिलिव्हरी जो ॲब्डॉमिनल बाइंडर मिळतो ना तो यूज केला पाहिजे. तो काय होतो, असं होल्ड करतो ॲब्डॉमिनलला आणि तुम्ही थोडं ताठ आणि स्ट्रेट चालायला लागता, जेणेकरून तो पोश्चरल पण एक त्याचा एक जो भाग आहे पोट दिसण्याचा तो कमी होतो. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही जितक्या लवकर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कराल तेवढ्या लवकर तुमचं पोट कमी होईल मॅडम. असं आपण म्हणतो की डिलिव्हरी नंतरचं पोट कमी होत नाही, पण हे टोटली रॉंग आहे. आणि हे केवळ आणि केवळ एक्सरसाइजेस आणि प्राणायाम फॉर ॲडिक्वेट टाइम आणि इमिडिएट पोस्टपार्टम केअर हे अगदी खूप सुंदररित्या करू शकता. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. हेलो. हेलो मैम, मेरा वन क्वेश्चन है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं तो उसका क्या रीजन होता है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ओके मैडम, अभी कैसे है ना, प्लेटलेट काउंट कम होने के n number of reasons are there, not only one reason. It's a medical reason or a pregnancy related reason. तो मेडिकल रीजन में क्या होता है कि ड्यू टू वायरल फीवर, एनी टाइप ऑफ वायरल फीवर, स्पेशली डेंगू, उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. तो उसको बहुत अच्छी तरह से क्लोज मॉनिटरिंग लगता है बाय हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. एंड आप क्या कर सकते हो बीइंग अ पेशेंट, तो एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड प्लेंटी एडिक्वेट फूड, ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द प्लेटलेट्स. एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉजेस है उसमें मेन जो है ना तो हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बिकॉज वो जो सब ब्लड प्रोफाइल है वही ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी का में अल्टर कर देता है, इसीलिए वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. तो उसमें आपका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, आपका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रहेगा. आपको जब पीरियड हो जाएगा, प्रेगनेंसी का एडिक्वेट पीरियड हो जाएगा, जैसे वायबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी 35 वीक्स, तो हम लोग पेशेंट डिलीवर भी कर देते हैं कि ज्यादा प्लेटलेट कम होके मदर को कुछ रिस्क ना हो जाए. ओके, थैंक यू.
एंड एक रीजन उसका क्या होता है कि अगर लेबर पेन्स हो ही नहीं रहे, दैट मीन्स कि कॉर्टिसोल हार्मोन is not secreted sufficiently. No, it's not like that. लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं, जैसे हम उसको ना पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जो 9 months एंड 9 days हम बोलते हैं ना, उसके बाद भी कैसे लेबर पेन स्टार्ट कैसे होते हैं कि इट्स ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ रहता है? वो सर्विक्स में रहता है, वो सम पार्ट में यूट्रस में भी रहता है। तो बेबी जैसे लेट प्रेगनेंसी पीरियड में, जैसे हम बोलते हैं कि जब प्राइमरी ग्रेविडा हो, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो, तो 3 weeks बिफोर वो बेबी बर्थ कैनाल में जाना चाहिए। और बर्थ कैनाल में जैसे बेबी का हेड डिसेंड होना चाहिए इन अ सिंपल लैंग्वेज, और वो डिसेंडेड हेड वो सर्विक्स पे, जैसे जो मुंह रहता है थैली का, उस पे वो स्टक आता है, और उसके प्रेशर से वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और तब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। लेकिन अभी आजकल क्या है ना मैडम, कि बहुत सारे बिग बेबीज देखे जाते हैं, और अपने यहाँ के मदर शॉर्ट, और तो वहां पे वो बेबी डिसेंड नहीं होता है एट दैट स्पेसिफिक टाइम, वो डिसेंड नहीं होता है। तो बेबी डिसेंड नहीं होगा तो वो सर्विक्स पे प्रेशर नहीं आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि यू डू द एक्सरसाइजेस इन प्रेगनेंसी, और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में दिए हैं। जैसे आपको मालूम होगा, या सर ने भी कल बताया होगा, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस, स्क्वैटिंग पोजिशंस, और यू डू द वर्क इन योर होम। जैसे आम्ही पेशंट्सला मॅडम हम बोलते कि आप थोड़ा सा पोछा भी लगा सकते हो, आप झाड़ू भी लगा सकते हो, या आप धोना भी धो सकते हो, आप कपड़े भी धो सकते हो। दिस पोजिशन हेल्प्स टू डिसेंड द बॉडी इन head in the birth canal, and that will enhances the prostaglandin release, and it will assist for the normal delivery. थैंक यू मैम। यदि सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उसके लिए पोस्टनेटल केयर क्या हो सकती है? अच्छा, तो मैडम जैसे हमने बोला है अभी अपने टॉक में भी कि वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी जो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है ना, तो ये हम 4 weeks बोलते हैं। तो सिजेरियन डिलीवरी के केयर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू से कि डाइट एंड एक्सरसाइजेस। तो डाइट तो बिल्कुल आप ना जैसे 5 days आप सॉफ्ट डाइट ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर एडवाइस, बट आफ्टर दैट यू कैन टेक अ फुल हेल्दी डाइट which includes adequate amount of fruits and salads. And about the exercises, जैसे बोला है कि sedentary time कम करना है, तो जैसे वॉचिंग टीवी, ऑन द मोबाइल, ऑन द स्क्रीन टाइम, ये टाइम आपको करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिलीवरी ये तो नया जन्म है स्त्री के लिए, तो क्यों बोलते हैं कि एवरी सेल और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इट वीकन्स इन द प्रेगनेंसी पीरियड एंड ड्यूरिंग द एग्जॉस्टिव पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, either it was a vaginal delivery or cesarean delivery. आप sedentary life जैसे मोबाइल देखोगे, कुछ पढ़ोगे, तो it is not allowed for the first 2 weeks because it weakens your eyes and all the systems. So cesarean delivery में आप जैसे प्राणायाम, जैसे हमने बोला डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, और आफ्टर 2 weeks आप केगल्स एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम कर सकते हो। और जो कुछ आसन भी आप कर सकते हो, जैसे आसन के बारे में सर आपको अच्छे से बताएंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग द 100 days of a cesarean section, you can do normal activities, all your exercises and all the normal activities. Thank you. Can I make some comments? Is that okay? From my side, sir? No, I'm asking, is it okay if Yeah. I comment on a few things? Yes, sir. Definitely. Number one, Dr. Khade, a fantastic and brief presentation. Thank you, sir. Well pointed and pointing out all the important things. I was laughing at your pinpointed comment about don't watch TV because today's patient lies in the bed, watches Yeah, TV sir. and expects the body to get fitter. Correct, sir. So very well
put that. Sir, I want to interrupt, sir. Sure, मैं sure. जब मॉर्निंग को या इवनिंग को भी राउंड को जाती हूँ ना वार्ड में, तो पेशेंट वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये रहता है, वीडियो कॉल चालू रहता है. Correct. So the husband and other relatives continue video call. Yes. So it is much stressful for the. And in that process, they forget when the baby is sleeping, they should be sleeping. Yeah. 4 times, 5 times a day. Correct. So baby sleep for 2-3 hours. If they don't sleep, and then when baby wakes up, they complain. Yeah, sir. I state the verb. You sleep when the baby sleeps. Yeah. That's right. Yeah. Now, couple of other comments was, your point is well taken about getting fit, getting exercise, and doing it right. And to answer the comment of the question of the lady who said, how can we come back to normal? We have lower abdominal misshape and laxity. If you look at most models and most fitness people, they come back to normal. Most women come back to pretty good shape. And that's because they are focusing on doing all the things that you're talking about. So there are living examples of all these women who are returning to normal body shape. So the point I'm making and reinforcing what you said is, everybody should become conscious that exercise is a must. Exercise is not a luxury or a maybe done whenever you like. It is a part of daily exercise that you must do. So thank you for the lovely presentation. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you, Kapil sir, for giving the opportunity. Yes, ma'am. I think a few more questions are there. Okay, sir. Yes, there is one question in the chat box. What does laxity of muscle mean? Is it flexibility of muscles or something else? It's yes. It loses the strength of the muscle. It loses. It is loosening of the muscles. Right. Can I just add to that? Yes, sir. Definitely. Okay, laxity exactly means loosening, but the loosening happens because muscles in those areas of the abdomen have to be stretched to cope with pregnancy growth. And they stay there continuously. So it is slightly different from yoga flexibility that we achieve by continuous stretching every day for 1 hour or whatever you practice. This happens nearly 24/7 and growing and increasing over the 9 months. So the muscles, if they are not pulled back into shape and given them that their memory is to shorten by doing exercise, they tend to stay loose. And then you wonder why things are not recovering. That is my take on it. Yeah, correct. Okay, audience, do you have any other question? Can I ask a question of Dr. Khade? Yes, Sorry. sir. Yes, Okay. sir. Well, are you able to throw any light at all on the number of people who have spinal anesthesia and general anesthesia these days? Yes, sir. Just curious. Yes. Yeah. Sir, the spinal anesthesia, sir, you are expecting to whom? The pregnant mothers or any people, any patient? We are talking pregnancy, so only pregnancy and delivery. So, yes, sir. I talked before also. The spinal anesthesia. So, it commonly we give a spinal anesthesia. 90% pregnant patient for cesarean delivery require spinal anesthesia. The spinal anesthesia we give in a on a back there is a vertebral column, or we said it as a spinal cord. So the needle, which we called it as a spinal needle, it is 10 times thinner than the needle what you used injection to give in an arm. That is so small needle is there. So we pierce this needle in the space in between the two vertebrae. There is a space, and we pierce it in, and the needle goes in a cerebral spinal fluid, which present in a spinal cord. And what injections? The injection we called it as a lignocaine, heavy. It's a 5% lignocaine. So we give that adequate amount according to the body weight of the patient and the duration of surgery. We decide the dose of the injection, and we give the injection
through that needle which we pierced in a spinal cord, and that the effect of that anesthesia is for the lower abdomen below the epigastrium. It's in a abdomen to the upper thigh, or we can say it for a mid thighs. But that lasts for 1.5 hours to 2 hours. This action lasts for that. So there is what I said in my talk, there is a very much misconception because of that spinal anesthesia I am getting the backache or anything, but it is scientifically it is very, very wrong. It is not the cause for the lower backache for a lifelong. And for a general anesthesia, it is less required during the pregnancy period. For small procedures, we require a small general anesthesia. We call it as a short GA or a short general anesthesia. And during the cesarean section, sometimes we require the general anesthesia, like when the BP shoots, बहुत ज़्यादा BP होता है, या पेशेंट को बीपी से झटके आते हैं, इक्लाम्शिया, या पेशेंट को हार्ट डिसीज होता है, या जैसे हमको पेशेंट का जनरल एनेस्थीसिया में सब हाथ में रहता है, हम रिस्पिरेशन पेशेंट का हाथ में, एवरीथिंग हाथ में है एनेस्थेटिस्ट के, तो फॉर जैसे कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेस है पेशेंट्स को, या कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है. थैंक यू. Yes, is there any other question? Yes. Okay, so I think there are no more questions, ma'am. So I would like to conclude the session. Thanks for giving your valuable time and giving us this huge information and guidance about the post-delivery. And thanks for your ideas and guidance to the mothers. I will conclude the session with thanking you, and whenever we need you in future, I will share the contact with the group members that if they have any question, please put on the group so that we will arrange a webinar to have such session in near future. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Good night, everybody. Good Thank night, you, everyone. Sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Yeah.